मेन मोटिव ये है इस पीस का कि ये समझना है कि यार जो स्टार्टअप्स सम और द अदर रीजन शट ऑफ ड्यूरिंग कोविड और बिफोर दैट, उसमें से क्या इनसाइट्स है, क्या लर्निंग थे, व्हाट आर द डूज डोंट्स, व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड कि यार मतलब जो भी आप बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को कुछ कहना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट, वी कैन basically cover that. So I had a plan to do business when I was in 10th or like 11th, like that time I would plan to start business. So I did my first job portal, and luckily my background is in finance, so I am a hardcore finance person. I worked with the equity market. I've cracked and topped the NSE, National Stock Exchange exams also. But my last job, Iris India Business Service. So one of my, the founders of Iris, he said that who will design the website, and out of nowhere I jumped at saying, okay, I'll do the designing. And I was not aware of what website is all about. I was not aware what domain name is all about. I was not aware what web hosting is all about. And you will not believe, Shreyash, I did the designing on Excel sheet. And I did the wireframing on Excel sheet and the Word, because that's the thing मुझे वो अच्छे से पता था मुझे. And till today, I think last few years till back, they were following the same design which I did that time. So I yes. तो मतलब इस तरीके का कैसे था आपका कि यार मतलब फाइनेंस का बैकग्राउंड है, वेबसाइट डिजाइनिंग में इधर हाथ मार दिया, फिर वो कर दिया, हाउ इज दैट? कभी कुछ प्लान नहीं था. I never had a plan to get into IT. I never ever had planned to get into IT. मुझे बिजनेस का भी था कि कुछ करना है, बट आई डोंट नो, मतलब सडनली हो गया ऐसा. कुछ कभी प्लान नहीं था कि I'll get into IT, I'll go into apps and all those things. So that was never a plan I had. It just happened. Somewhere it happened. Yep. So हाँ, sorry, please. Yep. And so after that, while doing it, I got so much in love, कि भाई मुझे IT करनी है. So I left my job and I started a job portal first. मुझे कोडिंग आती नहीं थी, nothing I had, so I had saved around in 6 month time, so I made a lot of money. So they had a plan of कि आपको fixed salary चाहिए कि आपको. So I was a writer, I was a news writer. So they had a offer कि you want to earn 90 rupees per news or you want to earn 24,000 rupees something salary a month. I said I'll take 90 rupees wala a salary option. So in my first month I made 44,000 rupees. Second month I made 60,000 rupees. So they said कि भाई अभी तुम्हें हम पे नहीं करेंगे, अभी you come to 24,000 rupees के पैकेज पे. So in those 3, 4, 5 months time, because it was 90 and I was very fast in that, so मैं 8 घंटे बैठ के 200 स्टोरीज लिख देता था मैं. I used to write that much thing, 200 stories, 100 stories. I एक ही बार में बैठ के I used to complete the things. So then I went into doing a first job portal called JobKeeda. It was about the lower the for example like housemates, the plumbers, how they can get a job about it. And I outsourced that whole project to a third party. Webworks India is the company whom we outsourced it. So उन्होंने कुछ मतलब being a first time entrepreneur, being the first time क्योंकि मेरे background family में कुछ भी business का नहीं है, like being a typical Brahmin family, no one in the business. So मैंने कुछ लाख रुपए थे मेरे पास. I got a credit card also first time that time. वो क्रेडिट कार्ड मैंने लास्ट ईयर पे किया बाय द वे. जो मैक्स आउट हुआ था आई पेड लास्ट ईयर दैट क्रेडिट कार्ड. सो आई गॉट अ 1.2 लाख क्रेडिट कार्ड मिला था मुझे उस टाइम पे. आई सॉर्ट द क्रेडिट कार्ड, गॉट द वेबसाइट रनिंग. बट वो वेबसाइट बनते बनते 9 महीने चले गए. 9 months it took. Why? Because my own mistake. And now I realize कि what IT is. So I used to keep on just adding new features every day, new feature every day. And then just took the time and I used to blame them कि भाई तुम लोग इतना लेट क्यों किया. बट वो 9 महीने में फायदा क्या हुआ कि मैंने पूरी IT सीख ली. So I learned how to code, I learned how to design, I learned how to do HTML. I learned lots of things into that. And that's how I started my second company called T Network. So T Network was, it's a pain of 9 months that people like me also must be suffering, whereby they're spending 2 to 3 lakh rupees on the website development, app development, and they never get the website because the developers don't understand their need. The client, they want so much thing that they miss the core of the business. So I started T Network, and वहाँ से for 5-6 years I did more than 250 projects. मैंने company bootstrap की, 4-5-6 के का revenue आया मेरे पास. I had a team of 28 people. So that's how it happens. That's a journey for 6 years happened. I met lots of people, people from Australia, UK, Dubai, everywhere it came. And then in 2015, I started One Wallet. So that has been like my journey from last, I would say 12-15 years has been now I'm doing business.
समझ गए। तो तो एक क्वेश्चन जो मेरे को इसमें बीच में आता है हमेशा इज लाइक यार ये बिजनेस का कीड़ा आप में कहाँ से है? जैसे आपने कहा फैमिली में जो किसी ने दूर दूर तक करा नहीं था, सो वेयर डिड राइट यू गेट राइट इंस्पिरेशन कि यार मुझे कुछ उखाड़ना है, मुझे कुछ करना है, राइट आई वांट राइट। टू डू अ जॉब? सो आई थिंक मतलब मैं ऐसे बोल नहीं सकता कि कहाँ से मुझे आया, बट somehow it came just to do a business. I think it's about more about that I can solve people problems if I do something alone. So I think that was the main motivation behind doing business. तो मेरा बिजनेस करने का तरीका ये नहीं कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, so my even still today when I'm doing something after One Wallet, so my focus not just to earn money, my focus also like कि how can I do something which is not happening right now if I'm not there. तो वो आई थिंक मोटिवेशन कहीं ना कहीं मेरे अंदर था. दैट्स व्हाई जॉब कीड़ा वाज द फर्स्ट पोर्टल कि यार बेचारे गरीब लोग को जॉब नहीं मिलती है तो उन लोग को जॉब दूं बेसिकली. So like and One Wallet ka the story. I'll just tell the story of One Wallet also. That's again inspired by changing the people's life. So I think that's how the term came business, but I think it's my motivation of doing something. So that's how it is. तो इसमें मतलब जब आप वन वॉलेट चालू कर रहे थे एंड बेसिकली व्हाट वाज द थिंग दैट इंस्पायर्ड कि यार ये वैल्यू चेन पकड़नी है या ये चीज पकड़नी है, मतलब जो पेपर वैल्यू चेन थी? समझा मैं. So the decision of starting One, I was doing good in T Network, but then when I started T Network 2009, that was the apps, the Play Store was not there, the App Store was coming up. So when I was doing business in starting T Network, the IT business, so I was charging very premium because there was lots of less developers. उतने freelancers आए नहीं थे. Play Store, App Store. So I used to charge for 5 pages. I used to charge 1.5 lakh rupees of static website. That's the brand we have built. That's a brand I built ki very premium. So अब लेकिन बाद में क्या हुआ? My team increased to 28 people, and my expense was huge per month. But then by 2015, 14, lots of people came in the market. So now the 5-page website can be done in 2,000 rupees. An app can be done in like 10,000 rupees. That was the people who were charging that time. So I was not able to balance out the cash reserve, balance out the business. That's a typical business problem. And I was looking for कि भाई ये चल नहीं सकता है. This cannot go long term now because either I have to change the whole technology, I have to work on something else, or this cannot work long term. So I was looking for a product. I was looking for कि मैं कौन सा product बनाऊँ मैं. I was going to Dubai to meet this. I forgot the name. Damac Properties. So in Dubai they have Damac Properties and Emirates. So I was going to meet them, and that day my paper wala came to my house. In the night, he just came कि भाई मुझे paper के रुपए चाहिए. कुछ 450 rupees was the bill something. And while just having a bit of conversation with him, I asked him कि आप कितना पैसा कमाते हैं महीने में? He said I earn 6 lakh rupees a month. So that a small paper wala earning 6 lakh rupees a month. And I said, but he said कि ये business अच्छा नहीं हो रहा है मुझसे. मैंने कहा क्यों? आप 6 लाख रुपए कमाते हैं with a margin of 30%, it's a 1.8 lakh rupees. वो बोलते नहीं, मेरे ऊपर आज भी कम से कम 15-16 लाख रुपए कर्जे है. Because I got 3,000 customers and I'm not able to go to collect the bill. Right? So from there, the idea clicked ki it's such a small thing, because 2015 the Paytm was there, the PhonePe was coming at that time. And I realized ki even still today, lots of payment, fintech thing is happening, payments are coming up. But these guys, they have an issue of not just collecting, they have an issue of designing the bills also, just making the bills also. So from that, I went to Dubai. I spent 14-15 days in Dubai. So in all this time of 14 days, मेरा पूरा ध्यान इस पेपर वाले पे गया. And I was just thinking how can I solve the problem, plus how this big market can be tapped. So when I came back for 2-3-4 months, we did the research, and by October I shut down T Network, and 100% I moved all my team members and myself into One Wallet. So that's how then the idea came. Again, the idea was inspired to change the lives of people, and just giving the commercial angle to it, I think is one of my good forte. I can see how can I give a commercial angle to a people's problem is not what I look into it. So that's how One Wallet idea came. Great. Got it. Yeah. While you were building One Wallet throughout your journey, what was that point जहाँ पर लगा यार हम तोड़ देंगे इसको, मतलब ये बड़ा बनने वाला है? So I think starting the 3rd, 4th month में I started getting calls from Times of India, from Hindustan Times about acquiring the company. In just 4 months, we have been into business and we started getting calls from publishers saying, "यार ये क्या कर रहे हो आप लोग?" Because they always wanted to do this, but since that was not their forte, वो उनका business angle नहीं था, so they never wanted to make an app for newspaper वाला, no, not for the milk wala, and that's the point I realized कि ये बहुत बड़ा होगा. And suddenly the respect what we got from the paper wala, because once we launched it, it just news, spread like a wildfire from everywhere.
we started getting apps download, you know, we started getting queries कि सर ये क्या है वो क्या है. So that's the time I realized कि अब इस पे focus करना है. That's the time, you know, I went ahead properly for raising funds. I went ahead, you know, properly hiring the teams, and we started doing working with the Dainik Jagran, Hindustan Times. So all this thing, like, you know, happened step by step after that time. So it was initial 3-4 months, you know, where I got the kick कि ये चलेगा, and it worked well also for the 5 years time till the time COVID happened. But मतलब the idea was good, but you know, idea एक होता है, but business अलग चीज होती है. So that's something, you know, I'll talk about it कि यहाँ पे क्या goof ups हुए थे हमसे, and you know what thing we would have solved it while working on the business, not on the idea. So idea was like good, but business thing got mixed up, and that was something like, you know, it just went there. बिल्कुल बिल्कुल. Right. तो लाइक जब आपने ये शुरू करा एंड व्हेन यू वर डूइंग दिस एंटायर थिंग, जब आप समझे कि पहली बार अपना जब धंधा शुरू करा, तो कोई सेफ्टी नेट ऐसा कुछ था आपके दिमाग में कि यार रखना है, some backup, something? I think वो उस टाइम पे लगा नहीं, but you know last 2 years it came to my mind कि I think it's age का भी फर्क होता है. I'm 35 right now, and you know I started business at 21 age. तो 21 की उम्र में कुछ बैकअप किसी को चाहिए नहीं होता है, you know. घर वाले होते हैं, they you know they take care of your expenses, and you don't feel about it, and you earn to, you know, pay yourself. You don't earn to pay for others' bills. But then, you know, then your age grows. You know, start you get married. You know, you get a kid. So then the responsibility comes to the picture कि आप अकेले अब नहीं चल सकते. Because मैं आज भी जो मेरे co-founders जो अभी है, मैं आज उसको, he is doing business for the first time. I told him, you know, in business you don't suffer. In business your family suffers. ये वो नशा है, you know, it's addiction for us. तो हमें भले ही, you know, कुछ भी pressure आ जाए हम लोग झेल लेते हैं, but family suffers because family have no option apart from just hoping and praying कि भाई इसका धंधा चल जाए. They are not able to do anything. So safety net कभी था नहीं. मैंने 2-3 साल से वो चालू कर दिया. You know, safety net is very important, not for you but for your family. So अगर आपकी business सफर भी करे तो आप यार, you know, because हम मतलब 21 years की एज में, so young, so I have seen कि 10 रुपए में कैसे आप जाके अंधेरी से वापस आ सकते हो. But आज वो possible नहीं होगा. You know, आज is not possible. You have to have a Ola. You cannot go in local train that time. So चीजें फर्क पड़ती हैं. But safety net उस टाइम पे कभी नहीं था. But yes, अभी safety net definitely, you know, before I do anything, I make sure that my wife and my kid and my parents, you know, they don't suffer because of me. So, you know, पैसा उनके अकाउंट में हो, अगर वैसा है तो बहुत important चीज़ है हमारे लिए. Ultimately, you know, comes down to paying bills. We have to understand it very properly. So one interesting point you made here is that you don't suffer, your family does, right? Yeah. मतलब I want to know more on throughout your successes and failures. What was the mental health around of yourself and around your family? Right. So one thing is good about me, like, you know, कि I learned, because since I started at 21 years age, so in 2-3 years में समझ गया था मैं कि आप business में emotional नहीं हो सकते. You know, you cannot be emotional in business whereby, you know, you get a hit every time clients say no to a business, or you get a check bounce, you know, or like a client say cannot pay you, and you also get lots of other things, you know. So आप हर time पे आप अपना emotions को ऐसे ऊपर नीचे नहीं कर सकते. You have to be static, because if you go ups and down, you will shut down your business. मतलब, you know, lots of entrepreneurs they shut down business not because they are not able to run it, but because they don't control the emotions. वो static नहीं रहते, you know, they're not static. And so I've been blessed till all this time कि बहुत pressure movement आए हुए हैं, you know, I think she also know, Abhishan you also know. So lots of pressure movement came, but I have always been static all the time. You know, I trained myself कि भाई कुछ भी हो जाए, भले 100 करोड़ की फंडिंग है, भले 100 करोड़ नुकसान हो जाए, आपको हिलना नहीं है. You know, if you even a good emotion is bad and bad emotion is definitely bad. But yes, coming to the families, so definitely, you know, when you start a new business or when you do anything, the family is very supportive. You know, not about me, I'm telling about everyone, because, you know, they get a hope also कि भाई कुछ अच्छा होगा. You must have seen, you know, when a cake shop opens, the whole family comes for the ribbon cutting, and, you know, there is a feast they do. But then same family member after 3 months time, when things don't work, there's a bit of pressure comes through because they have to pay the bills, you know, because उनको जाकर market से सब्जी खरीदनी है. You don't buy the vegetables going in the market. You don't, you know, go and you don't buy a fridge or TV. They go and they do the purchasing, and they have to have money in their pocket. So आपको प्रेशर भी, ये भी प्रेशर आते हैं, आपको ये भी प्रेशर आते हैं. अच्छे वाले प्रेशर भी आते हैं कि जहाँ पे आपको सैलरी मिलती है, and if you share this with your family, वो बोले कि भाई तुम धंधा बंद करो, पहले सैलरी उठाओ. It happens. That's the reality, you know. That's the reality what I've seen. And the co-founder, what I've got right now with me, you know, he has been 14 years of corporate, and his reason of doing business was the same. He was keep getting good salaries, and his family was keep telling him, salary uthate jao. So, like, you know, he never jumped into entrepreneurs. COVID happened, he lost his job,
then only like he joined the business. Otherwise he would have been just taking salaries and moving ahead. So I've been blessed to have my family. Otherwise pressure होते घर में तो मैं धंधा नहीं कर पाता. That's the thing. So Neeraj, I think your life seems to be full of very interesting decision-making journeys. True. So I take decision immediately, and एक अच्छी बात है कि whatever decision I take, my family never argue with me, and so that's me like one of the best thing with me. So उनको ऐसा भी नहीं मैं थोप देता हूँ decision कि ये करना है मुझे, but they know and they are sync with me कि whatever decision he's taking वो proper होगा, ऐसा है. So no second thoughts behind taking a decision. उस moment पे जो सही लगा वो कर लो. हाँ. I think वो सबसे important होता है because आपको static रहना है ना, तो सबसे मतलब even I tell my team also कि आप मुझे कॉल मत करो कभी मार्केट में आप हो, कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि 10,000 का सामान क्या मैं 8,000 में बेच सकता हूँ, डोंट कॉल मी, टेक अ डिसीजन. वो तुम 2,000 रुपए का बेच के मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बट द मोमेंट यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ, आपका स्टैटिकनेस हिल जाता है. So yeah, I'm just trying to tell कि धंधे में वो एक सीधी लाइन बहुत जरूरी है. If you don't have that staticness ना, मतलब neither good emotion neither bad emotion, otherwise वो सब fail हो जाएगा. That's the reason like one of the question she has pinged me about the sanity part, and that's how I've been sane. That's how I've not been lost myself. I've never cried in 15 years of my time. ऐसे बहुत टाइम आया था कि जहाँ पे सैलरी के पैसे नहीं थे, but I never cried. I never like shut myself down कि यार धंधा नहीं करना है. I never taken leave also. कितना गंदा भी मतलब I faced my team. They have not got salary, but I still came into office. मैं कभी ऑफिस से बाहर भागा नहीं. Otherwise typically what people do when they don't pay the salaries, they don't come to office. They come to office when they pay the salary. I'm talking about the employers, the entrepreneurs, and any real cases हैं. मतलब ये चीज छुपी हुई नहीं है. People don't talk about it, but I've been very open about it. कि आपको static होना बहुत जरूरी है. If you're not static, you are gone. So मतलब छोटे जैसे अभी acquisition का फटाफट ऑफर आता है तो people just leave the company. Again, that's a good emotion. So you have to be static about it also. कि good emotions आया, फट से चला गया मैं वहाँ पे. So after one word closed down, I did 3 business in 3 months time. I shut down all the business immediately, and then I sat on this what I'm doing right now, and it's been good journey in last 2.5 months. बिल्कुल. तो एक चीज जब आप बोल रहे थे कि फैमिली जब सपोर्टिव होती है and that piece is really important. Right. तो वहाँ पे how does the work life balance come into play कि आप उनके साथ उतना टाइम स्पेंड कर पा रहे हो कि वो सपोर्ट करे जा रहे हो और आप टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, तो एक एंड से फिर कंप्लेनिंग आना शुरू होता है कि भाई तुम दिखते ही नहीं हो, शक्ल ही नहीं दिखाते हो. True. So मेरे केस में especially after my daughter born, I made sure कि मैं ऑफिस घर 7 o'clock तक पहुंच जाता हूँ. I go home by 7 o'clock. And touchwood मैं blessed हूँ कि मैं 15 साल एक्सपीरियंस है मेरे पास धंधे का. So जब मेरी शादी वादी हुई थी 21 years की एज में, I got married at 30 years of age. So in those 9 years, I trained myself not to be workaholic. मैं हूँ workaholic. मैं बहुत काम करता हूँ, मैं रात में 3-4 बजे तक काम करता हूँ. But then I make sure that I take out 6-7 hours for my family every day. So when I get up in the morning, 2-3-4 घंटा सिर्फ टाइम पास करता हूँ घर पे. I spend my time with family. चाय 4-5 बार चाय पी लेते हैं हम लोग. Being a North Indian, we drink इतनी बारी चाय पी लेते हैं. फिर शाम को 7 बजे मैं घर पहुंचता हूँ. I never switch on my laptop till 12 o'clock. So I make sure that I work 14 hours, 15 hours a day, and rest I sleep for 4-5 hours, and 4-5-6 hours मेरी family के लिए होने चाहिए. So complaints आती नहीं है. I from my own side proactively I plan to take my wife outside. ये सब मुझे करना पड़ा because ये सब जो आपने बोला है ना अभी श्रेयस, ये हुआ था. There has been time जहाँ पे मैं संडे को भी काम करता हूँ. जैसे आज संडे है, आज मैं काम कर रहा हूँ, but I made sure कि मेरी family को मैं घुमा के लाया बाहर. I made sure that I spent my family, I took them out in the mall, I gave them a good round. We had a good party at home. So today सबके सब सो रहे थे. I just came home to the office, and that's the real thing, and that's how I planned the whole thing. कि वो भी सफर ना करे और मैं भी सफर ना करूँ. So they also say कि भाई चलो ठीक है तुम काम भी करो because you spend time with us. So coming back to one wallet piece, True. वो कौन सा पॉइंट था जब आपको लगा यार कि ये चीज अभी मतलब यार बंद करनी पड़ेगी या यहाँ पे कुछ नहीं जम रहा है? Like what was that thing that triggered, और वो चीज कैसे आइडेंटिफाई करी आपने? Right. So मैं बहुत ही ओपन रहूंगा दो चीज को लेके. मतलब I will not be hiding any information because I know people are going to listen it. So दो चीजें थी which made me very clearly कि भाई अब नहीं होगा. पहला चीज था the team support, the team. So team का support बहुत important होता है. Team का मतलब होता है सिर्फ co-founders, your own team. So when a team start losing the grip in a product business, especially it happens because product के business में पैसा तब आता है जब आप product बनाते हैं.
सर्विस बिजनेस में पैसा पहले आ जाता है, यू टेक एडवांस पेमेंट एंड देन डू द वर्क, तो उसमें मोटिवेशन रहता है. सो आई रियलाइज कि टीम वाज नॉट इन फोकस बिकॉज कोविड हैपेंड एंड वो 4-5 महीना बहुत प्रेशर था हमारे अंदर. एंड आई वाज सीइंग कि द टीम वाज लूजिंग द इंटरेस्ट because payments आना खत्म हो रहे थे, the funding is stopped. We raised a fund and the investors stopped in March saying कि यार अब पैसे डाल नहीं पाएंगे because COVID happened and we are not seeing this industry is going anywhere, which is true. So first is the team, second definitely was my own choice कि भाई मैं अगर और 8 महीने डालूंगा धंधे में, क्या मैं इसको दोबारा रिकवर करा पाऊंगा, right? And I जैसे ही क्वेश्चन पूछा आपने फैमिली के बारे में, so I kept my family on top because as I said कि family suffers. So I also thought कि अगर मैं 9 महीने डाल दिया, मेरे पास पैसे खत्म हो रहे हैं, I've been very open about it कि पैसे खत्म हो रहे हैं मेरे पास, अगर मैं 9 महीने डाल दिया और ये नहीं चला 9 महीने बाद, because everyone was backing out, all the investors backed out, even the team was backing out. So I said कि मैं अकेले responsibility लेके आगे चलूँ, इसको करूँ मैं, और ये नहीं चला तो who is at loss? And I realized that Nilesh Tiwari is going to be at loss because the investor team, the other thing, they were working, they were earning, proper सबको पैसा आ रहा था. But I said कि भाई, because that came on the table कि क्या आप अकेले काम करोगे बिना पैसे के? And I said yes also once. But then I sat down, I said कि भाई ये मतलब ये scam हो जाएगा बहुत बड़ा, ऐसा हो नहीं पाएगा. Because the industry wiped out, paper wala was not there, all paper wala ran to their hometowns and no one was ready to pay to us. वो लोग कुछ payment नहीं कर रहे थे, online payment dropped because paper drop ही नहीं हो रहे थे. And we had no backup product. So ये दो चीजों की वजह से I decided कि भाई अभी नहीं कर पाएंगे. It's a time also 5 years दे चुके हैं हम लोग. And being a very practical कि emotionally इसको लेके नहीं आता मैं आगे. अब टाइम आ चुका है कि जहाँ पे I also think about what else can be done at a scalable format. Because 9-10 महीना में डालता तो आज भी सिचुएशन कैसा है, आज भी लॉकडाउन, आज भी पेपर का सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ा हुआ है. So we lost around 80% of our client immediately in 3 months time. And सबने ऐप अनइंस्टॉल कर दिए थे, सब डेटाबेस डिलीट कर दिए थे, तो दोबारा उतनी रिकवरी तो नहीं हो पाती थी. So it was a very practical decision. We all took it very properly. Everyone was involved in the decision, all the investors, all the board members, and that's how we took a decision. And we ended on a very sweet note. कुछ भी कोई झगड़े झंझट नहीं हुए. Typically most of startups happen, but अच्छे से हो गया हमारा सब कुछ. And that's how I slowly shut down One Wallet. Because हमारे यहाँ पे जो टेक के टीम थे, हम उनकी सैलरी कट की थी 40%. एक बार कोविड में क्या हो गया कि सबने अपने सब टेक के बंदे उठाना चालू कर दिए. So my team was started getting offers from other companies of the same salary, and we cut 40% salary. So definitely, they just went ahead ki, can I just a minute, just go to phone. Yep. So they went ahead and they accepted the offers also. So it was good. मैं ऐसे नहीं बोलता कि क्यों मेरे लिए less में काम करोगे, right? Why people should work at a less price when you're getting a good job. Right. So this is what, the decision of One Wallet closing. It was a very practical decision. No, what to say. So we had the funds till June, July. And हमने फंड का प्लानिंग करके अगस्त में कंपनी बंद की हम लोगों ने, आई थिंक, या अगस्त में बिल्कुल. So if I understand well, you started with a very niche and you stayed focused on that niche. Yeah. And जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी जो सारी कंपनीज आ रही है, be it some players like Clubhouse or someone like that, these guys are following a similar strategy of coming out niche and then expanding slowly, right? So since you have been through this journey, I wanted to ask you, how fast is it important for you to expand your business away from the niche? And is it even kind of reliable to focus on a niche and then move ahead with that? So ये मैं बोलूँगा, one of the, जैसे मैंने बोला ना कि आइडिया बहुत अच्छा था कि बढ़ जाएगा, but the business part, वो इम्पोर्टेंट है. जो आपको क्वेश्चन है ना सागरिका, इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन. क्या होता है कि हम लोग इमोशनल हो जाते हैं कि यार ये नीश बिजनेस है, इसमें तो कोई नहीं है, हम ही इसमें नेता है, वी आर द किंग, वी आर द पेपर किंग, and no one will come into this business. तकलीफ वहीं पे होती है because the niche market, you have to understand. So one of the VC I met and she said, नीरज आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको यूनिवर्स लिमिटेड है, आपको यूनिवर्स कितना भी ग्रो हो जाए वो लिमिटेड है. So if you are saying you can build 1,000 crore rupees company but your market size was only 20,000 crore rupees, so चांस ही नहीं कि आप 1,000 crore भी कमा पाओगे, right? So जो niche area है ना, वो स्टार्टिंग में क्विक मूव देने के लिए बहुत अच्छा है. Why? Because you get eyeballs immediately. For example, like जैसे I am doing something for right now for the butchers.
राइट. सो ये लर्निंग है जो मैं अभी इम्प्लीमेंट करके मैं आगे बढ़ गया हूँ मैं. सो यू नो इफ आई टेल इन द मार्केट कि मैं बुचर्स को एक्टिवेट कर रहा हूँ फॉर द पेमेंट्स, इट्स गोइंग टू गेट आईबॉस लाइक एनीथिंग. सब बोलेंगे वाह वाह वाह, यू नो ये इंडस्ट्री किसने देखी नहीं है. बट अगेन सिचुएशन क्या होती है कि आप ग्रो नहीं कर पाते, आप स्केल नहीं कर पाते हो. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समवन कि आप नीश एरिया में काम करिए, लेकिन आपको लिटरली बड़ा धंधा बनाना है. यू हैव टू मेक अ गुड बिजनेस, यू हैव टू हैव अ गुड व्हाट इज रेवेन्यू कमिंग इनटू पिक्चर. सो आपको नीश के आगे जाना है. बिकॉज नीश का एक डिसएडवांटेज क्या होता है, since a close community, if any bad news comes, if any bad marketing happens, वो सबको तुरंत पहुंच जाता है. तो आपका जो फॉलिंग चांसेस है वो 90% के ऊपर ही है हर टाइम पे. 10% ग्रोथ चांसेस है. सो आप चालू करो निश में, लेकिन आप रुको मत. यू नो यू जस्ट गेट इनटू अदर थिंग्स एंड मेक श्योर दैट व्हाई यू आर गेटिंग इनटू निश. लोगों को क्या होता है, लोगों को लगता है यार मेरा ऐप मैंने बना दिया, वो निश में चला गया, तो मुझे अब बहुत अच्छा सा मैं आगे बढ़ जाऊंगा मैं. बट वैसा कभी नहीं होता है. I realized कि वैसा कभी नहीं होता. I accept कि I should have added more products in 5 years of my time at One Wallet. You know that's a mistake what I did at the time of time of closing the One Wallet. I realized that कि मुझे दूध भी एक्टिवेट करना चाहिए था, मुझे धोबी वाला भी एक्टिवेट करना चाहिए था. I should have activated more shops. So वो एक डेंजर जोन है, जो दिखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, बट रियलिटी बहुत बेकार है उसकी. That's not a good reality to be in. बिल्कुल. So speaking of the mistakes, overall अगर एक आप budding entrepreneur से बात कर रहे हो, so what are the don'ts that you will list out here? ये चीजें मत करना या ऐसी गलतियां मत करना. मैं तो मतलब एकदम क्लियर कट 2 ही पॉइंट रखा है मैंने. तो आई डोंट गो अबाउट 2 पॉइंट्स इन एनीवेयर. सो 2 ही पॉइंट है. पहला पॉइंट है KPIs. सबसे पहला पॉइंट है KPIs. आप कोई भी बिजनेस करो, कोई भी आइडिया लेके आओ, वो सब अच्छे आइडिया होते हैं, कोई आइडिया बुरा नहीं होता है. लोग KPIs आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. I'm telling you क्या होता है, people start, for example, any app development idea they get about a payments, so they don't focus on कि वो एक KPI क्या है जिसकी वजह से मेरा business का हाँ या ना होगा. For example, like in exams when you write something, तो KPI is to write very properly. One of the KPI is to write very properly. You know everything in head, but आप लिख नहीं पाओगे तो फायदा नहीं है. In business you got a good idea, but आप उसको sell नहीं कर पा रहे हो, and लोगों को भूल जाते हैं. लोग क्या करते हैं कि यार, जैसे एग्जांपल देता हूँ कि I was following one wrong API for 3 years and 3.5 years. Then I met someone and he said क्या तुम्हारी API गलत है. I was following the KPIs of bill generation happened on my app, जो 100 करोड़ तक पहुंच गया था. And I was very happy कि 100 करोड़ का बिल जनरेट कर रहा हूँ महीने का मैं, बट ऑनलाइन पेमेंट कितना आ रहा है, आपको कितना MDR मिल रहा है, that KPI we never followed. So I think first आप KPI मतलब आप business setup करो, but KPIs निकालो. जाती कि founder is very selfish about himself. There's I should have been selfish about myself, taking care, मुझे सैलरी चाहिए, मैं तो सैलरी निकालूंगा. आप समझिए, if you get a thought of this, you actually get out on the field and you start earning not for yourself but for the team also. And आप सिर्फ हर टाइम पे ये जुगाड़ सोचेंगे यार मैं सिर्फ टेक टीम की सैलरी पे करनी, वो पे करता हूँ, रेंट पे करता हूँ, तो काम हो गया मेरा, एंड अपने आप को वो भूल जाता है. लेकिन फिर 3 महीने बाद जब उसको क्रेडिट कार्ड वाला कॉल आता है तो प्रॉब्लम जाती है. देन ही सेड किया धंधा बेकार है, बट ही इज एक्चुअली पेइंग 12 लाख रुपीस अ मंथ टू टेक. उसमें से लाख रुपए भी निकालता नहीं अपने लिए, ये सोच के कि यार इन्वेस्टर्स क्या बोलेंगे, ये तो मेरा ही बिजनेस है, मैं तो कोई भी रुपए निकाल लूंगा मैं. तो people should not think that it's your business. It is, you are an employee, though you are a founder, but you are employed. You have to work like an employee. You should get the salary, you should be able to get the money in your pocket. So ये 2 चीजें कोई भी ध्यान में रख लेगा, बाकी everything comes into strategies. Strategies वो तो है ही है, but ये 2 चीज सब के सब मिस आउट करते हैं. Founder should take care of himself. He is the asset, he is the core engine, he is the main soul of the company. And if he is not happy and if he is draining down, he is mentally unblocked, सब strategy सब कोने में हो जाएगी एंड धंधा बंद कर देगा बाद आदमी. ये 2 चीज पे कोई भी ध्यान देगा, every business is good. Everyone can do a good business. Selfishness to your own self, to your own health, to your own money, and KPIs सबसे important है. Without KPI, business should not be done ever. बिल्कुल. And third जो मतलब मैं ऐड कर सकता हूँ, third जो मैं ऐड कर सकता हूँ वो है कि यार इन्वेस्टमेंट के लिए धंधा मत बनाओ. मतलब people should not do business for the investment. मतलब आजकल क्या हो, 99% लोग ये करते हैं कि यार धंधा बनाया तो पहले फंडिंग के लिए भागूंगा मैं. उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि वो 3-4 महीने स्पेंड करता है लोगों को एक्सप्लेन करने में, instead of that he would have worked and he would have got the revenue. उसको और पॉइंटर्स मिलते हैं बात करने के लिए. You would have got traction, you would have got more pointers. And second, अगर धंधा नहीं भी आया, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं भी आया, तो आपका धंधा बंद नहीं होना चाहिए. लोग यही करते हैं कि फंडिंग नहीं आया तो बिजनेस बंद हो गया, फंडिंग रेज नहीं कर पाया मैं. मतलब I have done a business of 43 lakh rupees in last 2 months time without any revenue, without any investment, and I will talk around 1.2 crore of revenue again.
in next 3 to 4 months time. तो वो हमने सिर्फ इसलिए किया कि भाई फंडिंग नहीं मिलने वाली है हमें, मतलब I would have got the funds, because कि लोगों से जानता हूँ मैं, I would have talked to them, but मैंने बोला नहीं यार फंडिंग नहीं मिलने वाली हम लोग को, let's see if we can earn from our own self. And I had just one single one of the important KPI कि मुझे ₹1,00,000 की सैलरी चाहिए. Can I do this Neeraj Tiwari? Can I do this Devan Kataria? So it was what we literally talked about it and we worked from the what to say backward काम किया हम लोगों ने, onward काम नहीं किया हम लोगों ने. तो ये इम्पोर्टेंट है कि रेवेन्यू पे ध्यान देना चाहिए, धंधा कैसे करो उस पे ध्यान देना चाहिए, बट दैट्स हाउ इट इज. बिल्कुल बिल्कुल. तो आपने बीच में एक बात करी थी अबाउट इन्वेस्टर्स बीइंग ऑन बोर्ड कि इन्वेस्टर्स सैलरी लेने देंगे कि नहीं. उससे एक चीज मुझे दिमाग में आया कि यार हाउ डू यू नो कि यार जो आपको टर्म शीट इन्वेस्टर दे रहा है वो इन्वेस्टर सही बंदा है आपके लिए, मतलब वो राइट इन्वेस्टर कैसे फाइंड करोगे आप? तो एक्चुअली कैसा है ना कि आई विल टेल यू, आई हैड अ वेरी, मतलब मेरे 8 इन्वेस्टर्स थे एंड आउट ऑफ देम आई थिंक 2 लोग ऐसे मिले मुझे जो लिटरली मतलब दे वर लाइक एंजल्स. मैं नाम नहीं लूंगा उन दोनों का, बट यू नो वन एंड आई नो वन वेरी क्लियरली. सो आई गॉट 2 इन्वेस्टर्स. जो इन्वेस्टर डरेगा नहीं कि मेरा पैसा डूब जाएगा, और जो इन्वेस्टर डे वन सोचेगा कि मैंने पैसा डाला और मैं डूब गया, वो राइट इन्वेस्टर है. तो एनी इन्वेस्टर हु पुट मनी एंड ही लिटरली फील कि मैं डूब गया, वो राइट इन्वेस्टर है. जो इन्वेस्टर पैसा डाल के होप करेगा, मैं एंजल्स की बात कर रहा हूँ, वीसीस की बात नहीं कर रहा. आई एम टॉकिंग अबाउट एंजल इन्वेस्टर्स. बिल्कुल. तो वीसीस हैव अ थॉट ऑफ प्लान्स, तो उनपे ऐसा नहीं चलता. तो जो वीसीस हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं. सो आई आइडेंटिफाई इन्वेस्टर बाय 2 ways. फर्स्ट, हाउ मच मनी ही इज रेडी टू पुट. इफ ही नेगोशिएट मी कि भाई मैं पैसा इतना डालूंगा, तो आई डोंट टेक मनी फ्रॉम दैट इन्वेस्टर्स. आई विल नॉट डिसाइड द होल थिंग. कि जो बंदा स्टार्टिंग में नेगोशिएट कर रहा है कि नहीं यार 50 लाख नहीं, मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दूंगा, यू आर वर्थ 30 लाख रुपीज, सो आई डोंट टेक मनी फ्रॉम देम. That's my rule number 1. Second, the investor who sees कि आप second round कब कर रहे हो, हमारा exit कब होने वाला है, कब कैसा होने वाला है, don't take those angels. So being angels has to be someone जो पैसा डुबाने को ready हो. He is the right angel investors, people should take it. उसके 2 फायदे हैं. पहला फायदा क्या है कि he is going to support you to make sure that money grows. जिसको पैसा चाहिए होता है वो क्या करता है, पैसा डाल के बैठ जाएगा कि अब तुम पैसा कमाओ, और जिसको ये पता है कि मेरे पैसे डूबने वाले हैं वो तुम्हारे साथ काम करेगा. Right? And that's how the team comes to the picture. When there is a struggle, there is a trouble, that time team building होती है, otherwise team building नहीं होती है. And investor is also part of team. So जो negotiate करता है पैसा डालने के लिए, don't take funds from them. And जो बंदा hope करता है कि 2 महीने में 50 लाख 5 करोड़ बन जाएगा, वो right investor नहीं है. So Neeraj, I mean, since the age of 21, you have been doing business, right? अभी तक, even after all of this journey, what is that one consistent factor जो आपको drive कर रहा है to continue and do business even after one card had to shut down? You're still as motivated, and I can see it when you speak. You're still as motivated to do the business. So what? So I think मुझे मतलब मेरे अंदर से I have not built it yet, which I thought at 21 years of age. So मुझे आज भी बस वही चीज मोटिवेट करती है कि मैंने वो चीज नहीं बनाया जिससे मैं खुश हूँ. मतलब मैं नीरज तिवारी कि मैं उस चीज से कैसे खुश रहूंगा, मुझे आज भी चीज बनाई नहीं है मैंने. एंड आई थिंक दैट कीप्स मी गोइंग. एंड सेकंड, मैंने अच्छी चीज किया कि मैंने सेफ्टी नेट मेरी फैमिली के लिए बनाता गया मैं. सो मुझे वहां से प्रेशर नहीं है कि यार मेरी फैमिली सफर करेगी बिकॉज ऑफ मी. सो आई हैव नॉट बिल्ट इट व्हाट आई रियली वांट. And I'm building right now. So आज जो मैं काम कर रहा हूँ, this idea I've been working for 4 years. So at one point of time also I got this idea जो आज मैं कर रहा हूँ. And 4 साल से काम करते आ रहा हूँ. I'm very passionate about it. And so I'll be very happy that day कि यार ये चीज हो जाएगा. और मुझे कब पता चलेगी वो चीज हो जाएगी, जब मैं दिमाग से शांत रहूंगा. Well, I'll not be worrying too much. So that day I realized कि हाँ भाई चीजें हो गई हैं. प्रेशर रहेंगे बिजनेस के, क्लाइंट के कॉल्स आएंगे, पैसे नहीं होंगे कि बैंक में, वो सब चीजें होने वाली हैं. So one wallet was one thing which I was very happy. वो नहीं हुआ, that's okay. But second, this is the thing what I'm doing it, and hopefully ये हो जाए इस बार. So that kept me going because I'm still hungry in terms of what I've not built. And वो society को मैं add नहीं कर पाया अभी तक. So my motivation of doing business to add something to society. So एक last चीज है as a closing remark. What does entrepreneurship mean to you? It's about building something from 0 to 1, not beyond that. 0 to 1 में जिसने जो काम कर ली वो धंधे वाला आदमी है, वो एंटरप्रेन्योर है. 1 to 100 के लिए he will have the people, but 0 to 1 में वो अकेला रहेगा. 0 to 1 में he will not have anyone. 0 to 1 में funds नहीं रहेंगे. 0 to 1 में उसके पास कुछ नहीं रहेगा. So people who basically survive this 0 to 1 are the true entrepreneurs.
entrepreneurs are not one who get the good ideas, cool ideas. वो लोग धंधे वाले नहीं होते. धंधे वाले वो होते हैं जो यार आइडिया आया, उसको तुमने पेपर पे लिखा और तुमने वो कर दिया. So they are the true entrepreneurs, and बस that's all. Society addition, social service, वो सब secondary है. But 0 to 1 survive जिसने कर दिया वो entrepreneur बन गया. Thank you so much. This was really insightful यार. बड़ा मजा आ गया आपसे बात करके and आप superbly candid रहे. That was thank you so much. Right. It was fun. Thank you, Shreyas. Thank you.